Hello and welcome to all of you. In this video we will discuss about the final accounts paper 2008 question and final accounts, as you know that it is also beneficial for the students of intermediate level. Now we move to the question that from the following trial balance and adjustments you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2007 and a balance sheet as on 31/12/2007. So these are debit balances given here, these are credit balances given here. As in the previous video I already discussed with you that you should know about the balances and you should know that where these balances should be treated. We have three different parts of this question. First part is to make the trading account, second part is to make the profit and loss account, and third part we make the balance sheet. In trading account debit side, we place all direct expenditures, and on the credit side we place all direct revenues as sales. So in trading account we normally we start the question from the opening stock if it is given in the question, and then we include the purchases. If purchase return is given, we subtract purchase return out of purchases, and after that we add up all direct expenditures including wages or some sort of fuel or carriage inward. And in the credit side we normally treat closing stock if it is given in the adjustment, and we include sales. So as you are seeing here that plant and machinery is asset, bill receivable asset, sundry debtors asset. It will be very easy for you that if when you know the exact balances, for example these three are assets, so it should be included in the asset side of the balance sheet. Building is your asset, salaries is your indirect expenditure, wages is your direct expenditure, postages and telegrams is your indirect expenditure, carriage inward is your direct expenditure, bad debt is your indirect expenditure, carriage outward is your indirect expenditure, general expenses is your indirect expenditure, cash at bank, cash in hand, closing stock. All these three things are your asset, capital is your liability, sundry creditors is your liability, bills payable is your liability. So these three should be included in the liability side of the balance sheet. Sales is your direct revenue. Provision for bad debt should be treated in the adjustment of the new provision of bad debts, and reserve is your liability. सो बैलेंसेस का मालूम होना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है. अगर बैलेंसेस आपको मालूम होते हैं तो बड़ी आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. दूसरे नंबर पे क्वेश्चन के अंदर ये हम देखेंगे कि इसमें एडजस्टमेंट्स क्या हैं. तो सैलरीज अनपेड सैलरीज के अंदर ऐड हो जाएंगी और ये 27,000 ये लाइबिलिटी साइड के ऊपर भी जाएगा क्योंकि ये लाइबिलिटी है आपके ऊपर. Charging interest on capital, it is your indirect expenditure and must be included in the capital in the liability side of the balance sheet. Raise bad debts provision, it is new provision, 2.5% of debtors. Formula is bad debt, add write off, add new provision, less old provision. Transfer 2.5% of net profit to reserve account. 2.5% of net profit should be included in the reserve
of liability side of the balance sheet. It was discovered in January 1, 2007 that stock on 31st December 2006 was overcosted by 3000. So जब भी स्टॉक ओवर कॉस्ट का बताए वो, इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि लास्ट ईयर जो स्टॉक इसने बताया था क्लोजिंग स्टॉक वो 3000 ज़्यादा इन्होंने बताया, तो ये ओवर कॉस्ट हो गया था। तो आपने क्या करना है कि इसको डायरेक्टली परचेजेस में से इसको माइनस कर देना है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे गिवन नहीं है, सो परचेजेस में से ये माइनस हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। देखें क्या क्या आएगा। परचेजेस आएगी, उसमें से स्टॉक ओवर कास्ट माइनस हो जाएगा। उसके बाद आप देखें जी वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो 43,200 आएगा। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, और सेल्स आ जाएगी क्रेडिट साइड के ऊपर 695,100। तो परचेजेस लेस स्टॉक ओवर कॉस्ट 3000, wages, carriage inward and sales, and your gross profit is 382650। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 382650, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं उनको माइनस करने के बाद अब आपके पास ये पैसा है सेल्स का बाकी बचा, और इसमें से हमने जितने भी बाकी एक्सपेंडिचर्स हैं वो माइनस कर देने हैं। अब बाकी एक्सपेंडिचर्स क्या क्या हैं? बाकी एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो इसमें से हम तलाश कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी एसेट, बिल रिसीवेबल एसेट, सन्ड्री डेटर्स एसेट, परचेजेस ट्रीटेड, बिल्डिंग एसेट, सैलरीज 33,000, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 2250, कैरेज आउटवर्ड 3000, जनरल एक्सपेंसेस 4500, तकरीबन यही। और बाकी वो बैड डेट की ट्रीटमेंट है वो अभी हम करते हैं। तो ये जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, कैरेज आउटवर्ड 3000, जनरल एक्सपेंसेस 4500, सैलरीज 33,000 एंड 27,000 आउटस्टैंडिंग, दीज शुड बी इंक्लूडेड इन द सैलरीज 27,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, interest on capital, charging interest on capital 5%, so capital amount is 2,10,000, so 2,10,000 का आपने 5% कैलकुलेट करना है जो कि 10500। आफ्टर दैट बैड डेट्स ट्रीटमेंट, बैड डेट्स 2850, add write off is not given in the question, add new provision 2.5% of sundry debtors, so sundry debtors 151,800, so take 2.5% of 151,800, that is 3795 and less old provision। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ये गिवन नहीं थी, इसके अंदर ये गिवन है। ओल्ड प्रोविजन ये आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलेगी। 10 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1050, बैड डेट्स और ओल्ड प्रोविजन हमेशा आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगी। सो 1050 must be subtracted and remaining amount is 5595. After that postage and telegram 2250, and now take 382650 minus all these expenses, not included this one, 2250, 5595, 10500, 60000, 4500 and 3000, and take 2.5% of the remaining amount, and that should be included in the reserve, and that 2.5% is 7420। अब ये 7420 हम इसको रिजर्व में भी ऐड कर देंगे बैलेंस शीट के अंदर। 60,000 इंक्लूडेड 7420 and 67420, and remaining profit is 289,385, and 289,385 must be included in the capital, and stock over cost must be subtracted out of this,
and interest in on capital must be added in this. ये आपको मैंने शुरू में बताया है कि स्टॉक और कॉस्ट को आपने कैपिटल में से माइनस करना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में ऐड करना है. सो 506885. दूसरी जो बड़ी ट्रीटमेंट है, बाकी मेरे ख्याल में बहुत आसान है, कोई इसके अंदर बैलेंसेस का पता होना चाहिए. दूसरी ट्रीटमेंट इसके अंदर आ जाती है सन्ड्री डेटर्स की. तो सन्ड्री डेटर्स का मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको फार्मूला बताया कि एसेट में आप कैसे ट्रीट करेंगे. सन्ड्री डेटर्स लेस राइट ऑफ लेस न्यू प्रोविजन. राइट ऑफ इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो 0, and new provision 3795, which is calculated here. 3795 new provision. So this will be subtracted from this sundry debtors. So remaining amount is 148005. Now in adjustment, salaries unpaid rupees 27,000 is liability for you. So this must be included in the liability side. Or outstanding salaries 27,000, and all the remaining balances are very easy to understand. Cash at bank is your asset, cash in hand, closing stock, building, plant and machinery, all these are your asset. Bill receivable is your asset, and on this side sundry creditors is your liability, bills payable is your liability, and outstanding salaries is also your liability. So 646305. So thank you very much. Stay safe, stay blessed, and take care of yourself and the persons around you. Thank you.